Hello everyone, welcome to English with Evelyn. I know it's been a long time since I brought a video, and I was very busy, and after that, I got a little lazy. I took some time out just for myself, and now I'm back with my videos, and I'm going to try at least to be very regular, if not very regular, then at least to a great extent. I'll try to be regular and bring out at least two videos per week. So I don't know, this is my commitment to myself. I do not want that. um, I should say something which I will not be able to fulfill. That's why I'm saying two. But I think I should bring out more videos than this because of the terrific response that I got in the earlier days when I was bringing a lot of videos. I was bringing a video almost every day, and I was enjoying it thoroughly. And so was, the overwhelming response that I got from the viewers. But I got a little lazy also, and because um, during the past few months, the response to the channel has not been so good. I don't know, I cannot just put a finger to it, like what could be the reason for that. But it is quite possible that I'm not promoting the channel as well as I should. But I seriously feel that if the content is good, it's original, and if it is useful, then the channel will promote itself. I don't know, maybe I am wrong, but I don't have the time also, and the inclination also, to go into the marketing part, because I don't know, the teaching part is what I enjoy the most, and also the learning part, because when I'm doing this, when I'm teaching and when I'm preparing content, there's so many things that I have learned myself, about not just the technical part about making videos and all, but so many other things that I came across all these months, and I enjoyed sharing those new things with you all also. So I hope this present video, Common Proverbs for Enhancing Speaking and Writing Skills, is equally useful to all of you, and I hope you will share amongst your friends and family members, and especially students who I think are going to benefit by this. Now, I've also noticed that there are a lot of teachers who follow my channel and who message me also, and they also ask me, they clear their doubts, and they also ask me, to bring videos on so and so topics. Okay, so because of that, and because of the comments that I get, I feel that I should bring some content which is useful for teachers also, practicing teachers also, and for people who are considering teaching as a profession. So that will follow, but like a video like this, Common Proverbs. Now this content can be used by the teachers as well. And in what way you can use these proverbs? Maybe you teach in a school where students already know these proverbs and the meanings. Now you can use these as a speaking skills practice. Like, you can give them as a writing skill practice also. You can give them this proverb and ask them to speak on it for say 1 minute. So they have to elaborate, they have to explain what is the meaning, and how this can give us practical life lesson. Take it. You can also use it for your writing skills practice. Like, you can give them this one of the proverbs. You can ask them to use this as a title of the story and write a story based on it, or just the theme. The title can be something else, or you can ask them to write a paragraph, which revolves around this theme, a particular proverb. So these are the ways in which you can use this if your students already know this. And if not, then of course, knowing these proverbs, the story, the meaning and the usage, that's going to be immensely helpful, I think. So शुरू करते हैं. And see,
uh, what a proverb is it is a saying that is prevalent in a particular culture, ठीक है, which has gone down from one generation to the other over a period of time, and something um, which gives you practical wisdom, okay, or is advice about life, ठीक है. तो ये proverbs होती हैं. जो idioms होती हैं वो अलग होती हैं, ठीक है. idiom मुहावरा होता है, proverbs लोकोक्तियाँ होती हैं, ठीक है. ये डिफरेंस होता है idiom और proverb में, ठीक है. proverb proverb जो बोलता है वही उसका मीनिंग होता है ना. idiom का implication अलग होता है. idiom का implication, you know, to have two left feet, ये idiom है, to have two left feet. इसको हम लिटरली नहीं लेते, ये इडियोमैटिक है. इसका मतलब कुछ है, कुछ और है. इसका मतलब है टू नॉट बी अ गुड डांसर. बट प्रोवर्ब है जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ये प्रोवर्ब है, जो बोला है वही उसका मीनिंग है, ठीक है ना. तो चलिए हम शुरू करते हैं. ये प्रोवर्ब्स है. हाँ, तो हम प्रोवर्ब्स और उनके मीनिंग्स तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला, इफ़ यू आर अ टीचर यू कैन यूज दीज प्रोवर्ब्स इन योर क्लासेस, इन योर क्लास, टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़. एक और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी बताती हूँ मैं. उसमें हम क्या कर सकते हैं कि जैसे उसके लिए हमको चिट्स की यूज़ करने पड़ेंगे. वी कैन राइट हाफ अ प्रोवर्ब ऑन वन चिट एंड हाफ अ प्रोवर्ब ऑन द अदर चिट, एंड वी कैन गिव द चिल्ड्रन टाइम टू टू लुक फॉर द अदर पर्सन, कि ये वाली जो प्रॉवर्ब है ना, इसका आधा पार्ट कौन सा हो सकता है. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा बच्चों के लिए ढूंढना, स्पेशली इफ द स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ दीज प्रोवर्ब्स, यू नो, ऑलरेडी, ठीक है. अगर पहले से नहीं पता है तो बच्चे थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करके देखेंगे कि ये प्रोवर्ब इसके साथ में मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है. अगर मैच कर लेते हैं, है ना, तब तो है ही अच्छा. और अगर नहीं करते हैं तो वो जो फनी सेंटेंसेस बनेंगे ना, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा क्लास में ना. मतलब इट्स गोइंग टू लाइट अप द यू नो एटमोसफियर इन द क्लास. फनी होगा, मज़ेदार होगा. और उसके बाद में क्या हो सकता है कि जैसे ये चिट्स मिल करके जब ये प्रोवर्ब बन गई है, तो जो दो बच्चे हैं जिन्होंने मिल करके एक प्रोवर्ब बनाई है, दोज टू स्टूडेंट्स विल work in as a team, and they are going to talk about that proverb, ठीक है. So you can explain those proverbs first, and then you can have this activity, or you can have this activity, the students will sit with the, you know, in pairs, and then you can explain once. और उसके बाद में the students will prepare something based on that proverb, because proverb उनकी बन गई है, दो बच्चों की टीम बन गई है, आप उनको उसके बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं. अब उसके बारे में उससे आगे जो भी एक्टिविटी आप करवाना चाहते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, वो टीम मिलके करेगी. तो ये एक अच्छा आइडिया है ना. तो चलिए शुरू करते हैं. यू हैव टू गेस here. Sometimes, you know, in some pictures the proverbs are given already. In some pictures you can guess also. So this is a picture where the proverb is not given, so you can guess. There is a pen, there is a sword. ये जो handle है ना, ये sword का handle है. तो what does this mean? And some of you have guessed right. It is, the pen is mightier than the sword. What does this imply? इसका मतलब है that trying to convince the people, you know, to follow some new ideas is easier if you convince them using words, using convincing arguments, using you know, good logic, rather than forcing them to do it. इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि तलवार या वायलेंस ही यूज़ की जाए, बट हाँ, अगर हम फोर्सफुली भी किसी को कुछ मनाना चाहते हैं, बजाय कि उनको उसके पीछे का लॉजिक या रीज़न समझाने के, तो उसके लिए भी द पेन इज माइटियर दैन द स्वॉर्ड यूज़ होता है, ठीक है. हाउ डू वी यूज़ इट? एक एग्जाम्पल है. इंस्टेड ऑफ यूजिंग वायलेंस, एक्टिविस्ट्स मस्ट ट्राई टू गार्नर मतलब टू गेट द अटेंशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स by writing articles in newspapers. The pen is mightier than the sword after all. So instead of resorting to violence, you should use the power of speech, words, to convince people. ठीक है. Now the second one. Wrong. Both are wrong. So what is the idiom?
what is the proverb? Sorry. Two wrongs don't make a right. मतलब उसने गलत किया तो मैंने भी ऐसा किया, लेकिन उससे सिचुएशन ठीक कभी नहीं होती है. अगर इस तरह से सभी करेंगे तो सिचुएशन तो खराब होती जाएगी. सो व्हेन समवन हैज डन समथिंग बैड टू यू, trying to get revenge will only make things worse. So how do you use it? It's not right to harm someone back if they have harmed you. Two wrongs don't make a right. ये कुछ सही नहीं हुआ अगर ऐसा किसी ने बिहेव किया है या ऐसा कोई करना चाहता है तो जैसे बच्चों को क्लास में आप बहुत यूज़ कर सकते हैं ये प्रोवर्ब. कैसे यूज़ कर सकते हैं? जैसे किसी ने बोला कि इसने मेरे मेरे नोटबुक पे पेन चलाया तो मैंने भी ऐसा कर दिया, तो आप समझाएंगे टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट. बेटा, इफ समवन हैज डन समथिंग रॉन्ग, यू डोंट रिपे बाय डूइंग द सेम थिंग. देन व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट आर यू कंप्लेनिंग अबाउट? ठीक है, ऐसे करके वी कैन यूज दिस इन क्लास ऑल्सो, इन आवर डे टू डे स्पीच speaking. Now, what is this picture? There is a place which looks like ancient Rome, and there are some gladiators fighting. So, gladiators are Romans. So, the idiom is, when in Rome, do as the Romans do. This doesn't mean that you have to become a gladiator and start fighting. It means it can be used in two different ways. One is that when you're traveling abroad, you do what the people are doing. So you just observe people and follow suit. That means just observe them how they are doing it, and then you do it. You just copy them, imitate them. जैसे वो कर रहे हैं वैसे कर लिया. तो this is when in Rome, do as the Romans do, है ना. और कभी क्या ये होता है कि कहीं पे भी जब हम जाते हैं, है ना, ज़रूरी नहीं कि वी आर ट्रैवलिंग अब्रॉड, बट हम कहीं गए हैं, जैसे आप किसी के घर पे विजिट कर रहे हैं, है ना, गेस्ट हैं आप कहीं पे, हाउस गेस्ट है, तो वहाँ पे आप वो नहीं करेंगे जो आप हमेशा अपने घर में करते आए हैं. आप वहाँ पे वैसे फॉलो करेंगे जैसे उनके घर पे सिस्टम होता है. सो व्हेन इन रोम, डू एज द रोमन्स डू, है ना. एंड यूसेजेस, Jimmy always uses his hands to eat whenever he is visiting India. He follows the rule, when in Rome, do as the Romans do. Okay? And the next. Now here you do not have to guess, because the proverb is, when the going gets tough, the tough get going. The going here means the situation. So when the situation becomes difficult, the strong people resolve, and they also become tough, and they fight the situation. They don't give up. Okay, they are resilient and they continue what they were doing. So when the tough gets going, when the going gets tough, the tough get going. Strong people don't give up when they come across challenges. They just work harder to overcome those challenges. ठीक है. यूसेज है, आई नो you're going through a tough time. Always remember, when the going gets tough, the tough get going. ठीक है. You can use this in your everyday speech, in your daily conversations. Okay, and children need a lot of motivation. One or the other child will come to you, with a problem. They haven't scored well, or there are some problems, due to which they're not able to study. So, or there are a lot of commitments. Nowadays, children are involved in so many things. They are in sports, they are, participating in the co-curricular activities also. And so their scores may suffer. So you tell them that don't give up. You're doing a good job. Just remember that when the going gets tough, the tough get going. That means their job has just started, the tough people. Okay, so the next idiom is, no man is an island. Of course, we know no man is an island, but what does this mean? It means that you cannot seclude yourself from others. We need the community around us. We cannot live completely independently. We need people's help to survive. Everyone needs help from other people. So how do we use this? It is essential for everyone to have good interpersonal skills, because
No man is an island, and we just cannot survive without the help of other people. Next idiom, next proverb is, I keep calling these idioms. So the next proverb is fortune favors the bold. है ना? हम कई बार बोलते हैं उनकी तो किस्मत अच्छी है, शी हैज़ गुड फॉर्च्यून, they are lucky, all of these things. So apart from 1%, I don't think luck matters so much. Okay. Actually it is how this idiom will explain this. Fortune favors the bold, मतलब किस्मत भी उन्हीं का ही साथ देती है जो लोग टफ होते हैं, रिस्क लेना जानते हैं और फोकस्ड होते हैं और अपना रास्ता जिस पे जा रहे होते हैं ना उसको छोड़ते नहीं है, हार नहीं मानते हैं। बाद में वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो लोग बोलते हैं अरे कितनी अच्छी किस्मत है इनकी, है ना। बट वॉट दिस प्रोवर्ब मीन्स टू टेल यू इज दैट फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड। तो अगर आप बोल्ड हैं, अगर आप अडिग हैं अपने रास्ते पर, आप स्ट्रांगली चल रहे हैं, देन success is not far from you. Okay. Now people who bravely go after what they want are more successful than people who try to live safely. Okay, if you don't want to take risks and you want to be in your comfort zone, so no one in the world has ever told you, any great person, they'll never tell you that, oh, I was just having a nice time, I was in my comfort zone, and good opportunities just knocked my door and there I am. ऐसा नहीं होता है ना। Everyone has to go through a tough time. They have to go through a lot of difficulties, meet a lot of challenges, and then only they become successful. और इसलिए उनकी success story जो होती है वो इतनी inspiring होती है, motivational होती है कि हम सब उनको, we all look up to them. So only those, this is the usage, only those who are not bothered by the challenges can achieve success. For fortune favors only the bold and the brave. So the next idiom is hope for the best but prepare for the worst. Nobody wants anything bad to happen to them or to any enterprise they are into. कोई नहीं चाहता है कि कुछ भी गलत हो, लेकिन होता तो है, जो होना है वो होता तो है हर बार. Everything does not turn out the way we want it to. So what happens is, you have to hope for the best but prepare for the worst, just in case. You will see mothers doing this, कि चलो कभी ऐसा नहीं हो जाए तो उसके लिए ये भी प्रिपेयर कर लेते हैं, जस्ट इन केस, है ना। यू से अरे कहाँ बारिश होगी, बट योर मदर सेज इंसिस्ट, नहीं अम्ब्रेला रख लेते हैं, है ना। बारिश नहीं हो तो अच्छा है, बट लेट्स बी प्रिपेयर्ड. ओके, सो दिस इज अ प्रैक्टिकल following of the proverb of hope for the best but prepare for the worst. Life is full of uncertainties. Hence, although we hope that the best would happen to us, we must also be ready to face adversities. कभी कोई प्रॉब्लम आए तो उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि हम वी आर टेकन बाय सरप्राइज कि अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये हो गया. ऐसा नहीं, आपको प्रिपेयर तो रहना ही पड़ता है प्रॉब्लम्स के लिए. Now this one is better late than never. कि कभी करना ही नहीं, उससे तो अच्छा है कि किया ही जाए, है ना. जैसे कि some people start taking up a hobby very late in life. हॉबी क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों से पूछा जाता है बेटा आपकी हॉबी क्या है, आपकी हॉबी क्या है. लेकिन कई बार क्या होता है, ओल्ड पीपल आफ्टर दे रिटायर, है ना, दे टेक अप अ हॉबी. सो देयर इट इज़ अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोवर्ब, बेटर लेट देन नेवर, है ना. अच्छे काम करने के लिए कभी भी कोई भी देरी नहीं होती. कोई भी काम, कभी भी अच्छा काम कर रहे हो, एनी टाइम इज अ गुड टाइम फॉर इट. सो बेटर लेट देन नेवर. ओके, what does this imply? It means it is better to do something or arrive after the expected time than not to do it or arrive at all. कहीं नहीं जाने से अच्छा है कि आप चलो कोई बात नहीं, लेट ही आए बट चले तो गए ना. तो पीपल फील गुड कि चिल, हाँ दे फेस प्रॉब्लम्स बट दे हैव एटलीस्ट कम, दे हैव टर्नड अप, है ना. वी इन्वाइटेड देम एंड दे केम. तो एक तो होता है इसका मतलब ये लिटरली गोइंग समवेयर, instead of not going at all, you go somewhere maybe later but still you make it, है ना, कोशिश करके आप पहुंच गए.
एक तो ये इसका मतलब है, और दूसरा जो मैंने आपको बताया एग्जाम्पल है ना, of taking up a career, a different career, or taking up a hobby, doing something new, which you always wanted to, but you never did it. But it's never too late for something good to happen. So better late than never. I arrived at my friend's party after everyone had eaten dinner, but I was still glad that I could make it. Better late than never. है ना? Now, birds of a feather flock together. And what does this mean? That people who have similar likes and dislikes, they like spending time with each other. And how is it used? My brother, who is an author, always likes to hang out with his friend who is a journalist. So both are into writing, and so birds of a feather flock together. Another very wise saying, which is very difficult to follow: keep your friends closer, keep your friends close, but your enemies closer. ठीक है, ये कुछ कुछ वैसा है, निंदक नियरे राखिए, है ना? So it's something like that. What does this mean? It means that if you have an enemy, you pretend to be friends with them instead of openly fighting with them. अब पुराने ज़माने में क्या होता था, जब प्रिंसली स्टेट्स होते थे, राजा होते थे सारे कंट्रीज़ में ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस वो यूज टू बी द सेटअप, सब जगह मोनर्की होती थी. तो उस ज़माने में क्या होता था कि अगर आपको लगता है कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरे खिलाफ प्लॉट कर सकता है, तो दे यूज टू कीप एन आई ऑन हिम, दे यूज टू कीप देम ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ देम. दे वुड नेवर लेट देम नो दैट आई सस्पेक्ट यू, क्योंकि आप उनको सामने सामने रखेंगे तो उनको मौका नहीं मिलेगा आपके खिलाफ प्लॉटिंग करने का, कंस्पिरेसी करने का. So this is what it means, that that way you can watch them carefully and figure out what they are planning. So keep your friends close, that is true, but your enemies closer. And this next proverb is: a picture is worth 1,000 words. इसमें पिक्चर है आइसक्रीम की और उसका डिस्क्रिप्शन है. वो डिस्क्रिप्शन को आपको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि आप तो पिक्चर देख करके खुश हो जाएंगे और सब कुछ पिक्चर में दिख ही रहा है आपको. इट इज़ क्रीमी, इट्स डिलिशियस, इट्स यमी. आई एम रीडिंग फ्रॉम द अदर पिक्चर. इट्स यमी, फज आइसक्रीम, स्मूथ चॉकलेट चिप, मिनी आइसक्रीम, strawberry ice cream with real chunks of strawberry, colored sugar sprinkles, waffle, sugar cone, sweet, wonderful, tastes great. See, so many words I'm saying, but all the words are useless before this one picture. So a picture is worth 1,000 words. Now, pictures convey emotions and messages also better than written or spoken explanations. और कैसे use कर सकते हैं इसको हम? Instead of trying to explain the pattern, why don't you send an image to the designer? A picture is worth 1,000 words. So if you explain by using your words, it's not going to still convey the idea as accurately as a picture would do. So send a picture instead of explaining it to me. There's no such thing as a free lunch. फ्री लंचेस होते हैं ना कई जगह, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ तो मोटिव होता है. तो इसका मतलब है थिंग्स दैट आर ऑलवेज ऑफर्ड फॉर फ्री ऑलवेज हैव अ हिडन कॉस्ट. कुछ ना कुछ तो इंटेंशन होता है जिसके वजह से आपको एक फ्री लंच दिया जाता है. अब फ्री लंच का मतलब ज़रूरी नहीं है कि फ्री लंच ही हो, कुछ भी हो सकता है. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है: द कंपनी इज ऑफरिंग सम एम्प्लॉयज अ वेकेशन इन लास वेगस. People are wondering what it is up to. There is no such thing as free lunch, as a free lunch. मतलब ऐसे कैसे हो रहा है कि एक फ्री हॉलीडे दे रही कंपनी? कुछ तो है, something is going to happen, or there is some or the other hidden plan which we do not know about. So how come this is happening? There is nothing called a free lunch. This is a cost for something or the other. ठीक है. Then there is no place like home. This means your own home is the most comfortable place to be in. And how do you use it? I know there's no place like home, but since we are going to be on this train for 36 hours, let's try to make yourselves as comfortable as possible. ठीक है.
अब ये सर थोड़ा इजी है ना, और इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू एक्सप्लेन है, तो इसको क्या कर सकते हैं, हम ये प्रॉवर्ब दे सकते हैं बच्चों को टू मेक देम राइट अ स्टोरी ऑन इट। एंड इफ़ यू आर अ स्टूडेंट यू कैन ट्राई डूइंग दिस, कि आप कोई भी अपने पसंद की प्रॉवर्ब लें और उसके ऊपर अपनी राइटिंग स्किल्स को एनहांस करने के लिए यू कैन राइट अ पैराग्राफ ऑन इट, और इफ़ यू आर वेरी क्रिएटिव यू कैन इवन राइट अ स्टोरी ऑन इट। ठीक है, स्टोरी राइटिंग पे अगर आप चाहेंगे तो मैं एक आपको वीडियो बना करके दूंगी, हाउ टू teach or how to go about writing stories for the to get good marks in the exams. The early bird catches the worm. इसका मतलब क्या है? It means that early risers and the ones who arrive first in a place are most likely to get what they want. पुराने ज़माने में सुबह जल्दी उठने का बहुत इंपॉर्टेंस होता था, सारे ही कल्चर्स में, न सिर्फ इंडिया में बट इन अदर कंट्रीज ऑल्सो। दैट इज़ वाई वी हैड नर्सरी राइम्स लाइक अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो जल्दी उठने की इंपॉर्टेंस तो है, लेकिन अब तो बहुत सारे ऐसे करियर्स हो गए हैं जहाँ पे जल्दी उठना पॉसिबल नहीं, इनफैक्ट लोग अर्ली मॉर्निंग तो सोने के लिए जाते हैं। ठीक है, so what else can it apply apart from getting up early and getting your things done so that you get success? इसका दूसरा इम्प्लीकेशन होता है कि आप कहीं पे भी पहले पहुंचते हैं ना, अगर इंस्टेड ऑफ डिलेइंग, अगर आप पहले कहीं पे पहुंचेंगे तो यू विल गेट द बेनिफिट। जैसे कि हैरी वॉज द फर्स्ट वन टू अराइव एट द बॉक्स ऑफिस। बॉक्स ऑफिस क्या होता है, जब हम मूवीज देखने जाते हैं तो जो हम टिकट खिड़की से टिकट्स खरीदते हैं उसको बोलते हैं बॉक्स ऑफिस। तो he was the first one to arrive at the box office and so he got the best seats. Early bird gets the worm. ठीक है, आप कहीं पे एंटर कर रहे हैं और वहाँ पे दो ही सीट बाकी है और आप जा करके जल्दी से बैठ गए, तो जो लोग पीछे आ रहे हैं आ रहे हैं आपके पीछे, आप उनको बोलेंगे अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म बिकॉज आई एंटर्ड फर्स्ट सो आई गॉट द सीट्स, लाइक दिस। नेक्स्ट इज फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। फेमिलियरिटी मतलब होता है आप किसी को अच्छी तरह से जानने लगें। ठीक है, तो फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट का मतलब होता है, कंटेम्प्ट मतलब नेगेटिव फीलिंग्स, नॉट सच अ गुड फीलिंग या कॉन्फ्लिक्ट, समथिंग लाइक दिस। तो मतलब आप बहुत ज़्यादा अगर किसी से मिलते हैं ना तो भी क्या होता है कि आपके बीच में टकराव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट बोला जाता है। Extensive knowledge of or close association with someone or something leads to a loss of respect for them or it. या तो उस चीज़ से, जैसे आपको बहुत ज़्यादा ही फेमिलियरिटी हो गई है, जैसे सपोज स्पेशली बॉसेस दे फेस दिस इफ दे हैव टू if they interact too much, then what happens is the respect that people have, they start taking them casually, and the respect that their team may have for them is lost. Okay, although people may not agree and it's not right in all the cases also, but yes, in some cases this may happen. Okay, it's not true in all situations and across all kinds of industries. No, it's not that, that's not the case. बट हाँ, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। ये कई बार ऐसा भी होता है ना कि बहुत ज़्यादा हम किसी एक जगह पे बहुत ज़्यादा बार जाते हैं तो हमको फिर वो अच्छी नहीं अच्छी लगना बंद हो जाती है ना। तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो वी कैन यूज दिस प्रॉवर्ब। अब यहाँ पे कैसे हुआ ये, इट इज समटाइम्स ऑब्जर्व दैट फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, दैट वी आर अट्रैक्टेड टू दोज हु सीम सो डिफरेंट फ्रॉम दोज वी नो एट होम, है ना। कि बहुत ही आप कोई यूजुअल इंटरेक्शन में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं तो आप उसके अलावा कुछ ढूंढते हैं, बिकॉज फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, डिसलाइक। कंटेम्प्ट का मतलब ज़रूरी हमेशा नहीं है कि नफरत ही हो, है ना, इट मीन्स डिसलाइक। तो यू लुक फॉर समथिंग डिफरेंट बिकॉज चेंज इज ऑलवेज फ्रेश, है ना, चेंज अच्छा लगता है। इन दिस केस वी मीन फेमिलियरिटी ब्रीड्स contempt. So this was all for today. Thank you so much for watching. I hope you have liked this video, and please leave comments for me and help me think of what topics should I make, because there are so many topics and so many classes and subjects that I have taken up, but I'll go for the topic which is most demanded and also which is interesting.
Okay, so bye bye. Thank you so much for watching and see you soon.